Hello friends, welcome to the physics class. In last lecture, we have seen de Broglie hypothesis. In de Broglie hypothesis, what we have seen, de Broglie stated that since nature loves symmetry, electromagnetic radiation have dual nature, particle nature as well as wave nature. If electromagnetic radiation have wave nature as well as particle nature, then according to symmetry, matter should also have particle nature and wave nature. Particle associated with it and wave associated with it. Therefore, he stated that when a particle or a matter moves, it also associated with frequency and wavelength. And he derived one expression for it, which is wavelength of a matter wave, which we have derived in last lecture. The interesting fact is that for this theory, de Broglie got the Nobel Prize. For this theory, de Broglie got the Nobel Prize. And one more interesting thing over here is J.J. Thomson got Nobel Prize for invention of electrons. Okay, sorry, J.J. Thomson discovered the existence of electron, and for that he got Nobel Prize. And his son got Nobel Prize for showing that electrons shows wave nature. J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनके सन J.P. थॉमसन ने उस इलेक्ट्रॉन को बताया कि वो वेव नेचर भी शो करता है. तो डी ब्रॉगली का ही एप्लीकेशन है ना ये, सिंस डी ब्रॉगली स्टेटेड दैट मैटर आल्सो हैव वेव नेचर as well as particle nature. Then for this thing to show that matter or electrons, photons, this have particle nature or wave nature, we have to do certain experimental work, and that experimental work was done by Davison and German. Davison and German experiment that we have to study now. For that, please concentrate on the PPT. See this diagram. This is Davison's and German experiment. Over here, we have this type of setup, which they have used to show that electron behaves like a wave. In initial chapters in optics, you have studied, in wave theory, you have studied about light follows diffraction and interference. In diffraction, you know that for a certain value, we get a central maximum, and then we have that is constructive interference at the central maximum, and in diffraction we get secondary maximas. Intensity will goes on decreasing of the constructive interference in the case of diffraction, you know that, and there is destructive interference. Second thing is destructive interference is not completely dark as compared to interference. In interference, the maximas of all the constructive interference is same, and destructive interference have completely dark. Okay, बट हमने वही चीज जब डिफ्रैक्शन में देखी थी, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता था, हमको एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलता था और उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती थी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो था वो कंप्लीटली डार्क नहीं था. दैट वी हैव स्टडीड इन वेव थियरी. अगर इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, तो वी कैन से दैट इट हैव वेव नेचर. यस, अगर हम ये शो कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो करता है, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर.
And for that, Davisons and German did this experiment. Okay. Then if we see the explanation, the whole setup is enclosed in an evacuated chamber. It is used an electron gun, a device to produce electron by heating a tungsten filament F using a battery B. See over here, यहाँ पे जो ये टंगस्टन फिलामेंट है F है, उसको हीट किया है बैटरी B से। B से अगर जब से ही हम इसको हीट करेंगे तो ये टंगस्टन फिलामेंट इमिट क्या करेगा? It will emit इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। तो ये हम पूरा डिटेल पहले एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द वैक्यूम टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग suitable accelerating potential across the cylindrical anode and are collimated into a focused beam. This beam of electron falls on the nickel crystal and is scattered in different direction by the atoms of the crystals. Okay, now see this diagram. First of all, I will explain you this one. Over here we have this filament. Okay, यहाँ से हम लो टेंशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो लोग यहाँ पे जैसे ही बैटरी से इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, फिलामेंट क्या करेगा? इमिशन स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉल्युमिनेटिंग एनोड है जो हायर पोटेंशियल पे अटैच है। सी ओवर हियर, वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस एनोड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। Okay, then the next thing is, this is basically collimating anode is basically used to focus and accelerate the electrons. ठीक है, उसकी फोकसिंग करने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कॉल्युमिनेटिंग एनोड। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं टंगस्टन फिलामेंट से, जिसको वोल्टेज मिला है बैटरी बी से, और ये जो चेंबर है दैट इज कंप्लीटली वैक्यूम और इवैक्यूएटेड चेंबर। इस इवैक्यूएटेड चेंबर में ये जो पार्ट है ये हाई टेंशन है, जो एनोड को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है ये कॉल्युमिनेटिंग एनोड, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं उनको फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एज वेल एज उनको एक्सेलरेट करता है। इसीलिए कॉल्युमिनेटिंग एनोड इज आल्सो कॉल्ड इट एज एक्सेलरेटिंग एनोड। इसे हम एक्सेलरेटिंग एनोड भी बोलते हैं। Then it get be accelerated by the anode and potential difference provided by over here. Then it will hit to the nickel crystal and they get scattered. This light will get scattered when hit it over here. And this is the angle theta between incident and this scattered ray. This or diffracted electron beam. ये निकल क्रिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जिसको एनोड ने एक्सेलरेट किया है, प्रोड्यूस किसने किया है? फिलामेंट ने किया है। तो वो निकल क्रिस्टल के एटम से हिट होता है और स्कैटर्ड होती है उसकी बीम, और उसके डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ डिफरेंट एंगल से मूव होते हैं। तो अगर आप यहाँ से मूवेबल डिटेक्टर को मूव करोगे फॉर अ सर्टेन एंगल, you will get maximum electron at that point of time. जैसे यहाँ पे आपको maximum electron मिल रहे हैं, जैसे आप इस साइड जाओगे तो this electrons intensity will goes on decreasing. उधर ज्यादा है तो बाद में कम होते जाएंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? we are getting a central maximum and then it goes on decreasing, then becoming minimum, then it starts to increase, which will be called it as secondary minimum. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये हम डिटेक्टर का एंगल चेंज कर रहे हैं तो हमें डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है एक ही जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा दिखा रही है, बाद में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड देन फिर कंस्ट्रक्टिव है। तो सेम थिंग ना, डिफ्रैक्शन इज अप्लाइड ओवर हियर। यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है तो व्हाट कैन वी से कि इलेक्ट्रॉन फॉलोज डिफ्रैक्शन। इट मेक्स अ सेंस दैट इलेक्ट्रॉन हैव wave nature. Electron have wave nature. Is it okay? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता था, वेव है, वेव प्रॉपर्टी तो होगी, हमने उसके पार्टिकल नेचर बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर और क्रॉम्पटन इफेक्ट में। इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल नेचर तो होगा ही, उसका वेव नेचर हमने बताया डेविसन से जर्मन एक्सपेरिमेंट में।
एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगा एसोसिएटेड विथ मैटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो मूवेबल डिटेक्टर है और इसमें जो करंट मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा डिटेक्टर से, उससे मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच विल डिटेक्ट द करंट। तो इस सर्टेन एंगल पे, एक एंगल पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वहां करंट भी ज्यादा होगा। और उसके बाद जैसे ही हम इसका एंगल चेंज करेंगे, if you move this detector up to this point as goes on changing the angle, its intensity also changes. By this you can say that electron follows a diffraction, therefore we can say that electron also follows wave nature. Davisson and German varied the accelerating potential from 44 volt to 68 volt and observed the peak in the intensity of the scattering electrons at scattering angle of 50 degree for potential of 54. तो 50 डिग्री पे पोटेंशियल डिफरेंस 54 पे उन्होंने चेक किया। दिस पिक वाज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस of the electron scattered from different layers of the regular spaced atoms of the nickel crystal. तो यहाँ पे हुआ क्या, जब निकल क्रिस्टल से हिट करके आया, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है, बेसिकली 54 वोल्ट का है, ठीक है, 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आपने मेंटेन किया, और उसके बाद जो एंगल है दोनों रेज के बीच में थीटा इज 50 डिग्री आपने रखा, तो उस टाइम पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट था वेव थ्योरी के अंदर, जो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैक्सिमम होगी। और हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पता ही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे उसमें वो वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कितना हो गया, 54 पुट करने के बाद आंसर कम्स टू बी 0.167 नैनोमीटर। तो सी वो हियर हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकाला इलेक्ट्रॉन वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज 0.67 नैनोमीटर, और जो हमने थ्योरेटिकल निकाला दैट इज 0.65 नैनोमीटर। तो ये वेरीफाइड हो गया ना कि थ्योरेटिकल जो वैल्यू है और प्रैक्टिकल वैल्यू नियरली सेम है, therefore now we can 100% say that electron have wave nature. From the electron diffraction measurement, the wavelength of matter wave associated with electron was found to be 0.165 nanometer. The two values of lambda obtained from the experimental results and from theoretical de Broglie relation were in close agreement. तो हमने जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकाला था, रिलेशन से निकाला था वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटल निकाला, वो नियरली सेम है। तो इसे हम 100% बोल सकते हैं जो चीज थ्योरेटिकल आई है और प्रैक्टिकल आई है वो करेक्ट है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव नेचर। The Davisson and German experiment thus substantiated de Broglie's hypothesis of wave particle duality and verified this relationship. तो अब जो डी ब्रॉगली ने वेव थ्योरी का हाइपोथेसिस दिया था कि मैटर आल्सो हैव पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, वो इस एक्सपेरिमेंट से और थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया और वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप, जो डेविसन ने एंड जर्मन ने बताया। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पॉइंट। तो सी ओवर हियर, ये चैप्टर में हम बेसिकली किया क्या, पहले हमें पता था लाइट बिहेव्स एज अ वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू दैट वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, but we can't able to prove what is photoelectric effect and Crompton effect with the help of wave nature। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो क्वांटम थ्योरी के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट हैव dual nature, particle nature as well as wave nature. If it have particle nature and wave nature, this theory is taken by de Broglie. He stated that natures love symmetry.
If electromagnetic radiation have dual nature, then matter should also have dual nature. Then he given that matter also associated with frequency and wavelength, and this wavelength was de Broglie wavelength or matter's wavelength, de Broglie wavelength और wavelength associated with matter. इसी को जो एक्सप्लेनेशन करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो दिया, रिलेशनशिप प्रोवाइड किया, उसको आगे जाके जर्मन एंड डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली भी प्रूव किया इन्होंने। तो जो रिलेशनशिप डी ब्रॉगली ने दिया था वो 100% करेक्ट हुआ। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर एज वेल एज पार्टिकल मैटर आल्सो हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इससे पहले हमने क्या देखा, ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम आगे पॉइंट्स देखेंगे, ड्यूअलिटी ऑफ पार्टिकल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। Material particles show wave-like nature under the certain circumstances. The phenomenon is known as wave-particle duality of matter. Same just like radiation. Electromagnetic radiation में certain cases के अंदर wave nature होता है और certain cases के अंदर particle nature है। तो इसलिए हमने क्या बोला था, electromagnetic radiation have dual nature। वैसे ही मैटर में भी वही केस है, मैटर भी दोनों की तरह बिहेव करता है, सम टाइप लाइक पार्टिकल एंड सम टाइप लाइक वेव। फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर k are used to describe the waves in classical theory, while mass m and momentum p are used in describe particles। और जनरल केस में जब हम देखते हैं वेव के रिगार्डिंग, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से एंड वेव नंबर को k से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्लासिकल थियरी में हम जो है मैटर के लिए मास एंड मोमेंटम को बेसिकली कंसीडर करते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इंप्लाइज दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव एन एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी एंड एसोसिएटेड वेव नंबर एंड ऑल वेव्स हैव अ एसोसिएटेड एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर में क्या बोलता है कि जो भी पार्टिकल है, मैटर है, जब वो मूव करता है तो वो एसोसिएटेड है एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक वेवलेंथ के साथ, मास के साथ एंड मोमेंटम के साथ। जब भी कोई मैटर मूव करेगा तो इट विल बी गेट एसोसिएटेड विद अ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज विद अ वेवलेंथ एज वेल एज मास एंड मोमेंटम। और ऑल द वेव्स हैव मास एज वेल एज मोमेंटम as well as energy. Next point is the wave particle duality of matter due to quantum behavior when we are dealing with microscopic object size 10 raised to power minus 6 meter, smaller order of magnitude of h sets the scales at which phenomena manifest themselves। तो यहाँ पे duality of quantum theory जो है वो बेसिकली हम जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे देखेंगे और स्मॉल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये वहां पे मैनिफेस्ट होगा, मतलब एप्लीकेबल वहां पे भी ये है। इफ ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव एन एसोसिएटेड वेवलेंथ, वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ, बट द कैलकुलेटेड वेवलेंथ इज नेग्लिजिबली कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट as well as width of the path on which the objects are moving। तो अगर हम देखें बेसिकली कि हर मैटर के साथ हम उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, बट उस मैटर के कंसिडरेशन के कंपैरिजन में उसका वेवलेंथ जो होगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होगा। हर मैटर के साथ हम उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, बट उसका वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में, उस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। Are you getting this thing? We can find the wavelength associated with each and every matter, ठीक है, मैटर के साथ हम वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साइज के कंपैरिजन में उसका वेवलेंथ जो होगा वो बहुत कम होगा, that will be very very small। Therefore the wavelength associated with macroscopic particle do not play any significant role in our everyday life and we need not consider their wave nature। और जैसी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, बहुत बड़ा होते जा रहा है तो उससे एसोसिएटेड उसका वेवलेंथ तो और कम होते जाएगा, तो वो
एवरीडे लाइफ में उसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है, निग्लिजिबल। अगर बहुत बड़ा मैक्रोस्कोपिक, अगर हम बड़े पार्टिकल्स की कंसिडरेशन करें, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट की कंसिडरेशन करें, तो उस केस में उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत और कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। Also, the wavelength of macroscopic particles are so small that they cannot be measured. और वो इतने स्मॉल हैं कि हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। मैक्रोस्कोपिक मींस बड़े पार्टिकल्स अगर हैं, तो उसके कंसिडरेशन में अगर हम उसका वेवलेंथ फाइंड करेंगे, फाइंड, क्योंकि वो इतना स्मॉल है कि हम फाइंड ही नहीं कर सकते, विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, तो इसलिए हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। Photon picture allows transfer of energy and momentum in same manner as Newton's mechanics. तो यहाँ पे जैसे न्यूटन मैकेनिक्स में हमें पता है पार्टिकल जब हिट करता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, वैसे ही फोटोन पिक्चर में भी सेम है। फोटोन पिक्चर में भी एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर होते हैं। दैट वी हैव सीन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज इलेक्ट्रॉन हिट to the photosensitive material, it hit to the electron, and if the frequency of that radiation is greater than threshold frequency, the electron will jump out from the surface. तो उसने अपना मोमेंटम और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और वो सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल गया तो वो सरफेस से बाहर जंप करता है। दैट इज द केस। Wave nature does not modify that whenever wavelength are called compared to be dimensions of slit or obstacles or are not measurable, we can use Newtonian mechanics. Wave nature does not modify that whenever wavelength are small compared to the dimension of the slit or obstacles or are not measurable, we can use Newtonian mechanics. और जहां पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है क्या वेव नेचर, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन द थिंग इज over here we have completed this topic. Now in next lecture we will do numericals. Okay, if we see this dual nature of radiation and matter, what we have understood in this chapter, that electromagnetic radiation have dual nature, particle nature as well as wave nature. Sometimes it behaves as a wave, sometimes it behaves as a particle. Therefore we can say that the radiation have dual nature. Just like that, matter also have dual nature, particle nature as well as wave nature. Sometimes it behaves as a particle, sometimes it behaves as a wave. And in this case, we have seen the photoelectric effect. The photoelectric effect is the heart of this chapter. If you understood that, then it will be easier to understand the whole chapter. If you have any doubt regarding this topic, you can ask us on WhatsApp group or watch these videos more than once. Then it will be easier to you to understand this topic. In next lecture, we will see the numericals. Thank you.